ભરૂચના ચાવજ ખાતે ગેઇલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા ગેસ લીકેજની આપાતકાલીન પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે એક મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મોક ડ્રીલનો હેતુ આવી ઘટનાઓ સમયે તાત્કાલિક અને અસરકારક પ્રતિસાદ આપવાની તૈયારી ચકાસવાનો હતો. તાજેતરમાં કંપનીની પાઇપલાઇન પાસે કામગીરી દરમિયાન જેસીબી મશીનનું બકેટ પાઇપલાઇનને અથાડતા ગેસ લીકેજની ઘટના બની હતી. આ દુર્ઘટનામાં સ્થળ પર કામ કરી રહેલા 3 કામદારો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. મોક ડ્રીલ દરમિયાન ગેસ લીકેજની કાલ્પનિક પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ ફાયર અને રેસ્ક્યુ ટીમોએ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. વિસ્તારને તાત્કાલિક કોર્ડન કરી સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી અને ઇજાગ્રસ્તોને સલામત સ્થળે ખસેડી તબીબી સારવાર માટે મોકલવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ મોક ડ્રીલમાં જીએનએફસી, ડીપીએમસી અંકલેશ્વર, ડીઈએફએસ દહેજ, ભરૂચ નગરપાલિકા ફાયર બ્રિગેડ, ગેઇલ ઇન્ડિયા ગંધાર અને એનડીઆરએફની વડોદરા ટીમોએ સક્રિય ભાગ લીધો હતો. તમામ વિભાગોએ સંકલિત રીતે કામગીરી કરી આપત્તિ સંજોગોમાં ઝડપી પ્રતિસાદ આપવાની પોતાની તૈયારીનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ પ્રકારની મોક ડ્રીલનો મુખ્ય હેતુ વિવિધ એજન્સીઓ વચ્ચે સંકલન વધારવો, માનવ જીવન અને સંપત્તિનું નુકસાન ઓછું કરવું તેમજ કોઈપણ આકસ્મિક પરિસ્થિતિમાં અસરકારક રીતે પહોંચી વળવા માટે સજ્જ રહેવું છે. આવી કામગીરી દ્વારા સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં સુધારો લાવી ભવિષ્યમાં બનતી ઘટનાઓને નિયંત્રિત કરવામાં મદદરૂપ થશે. આ પ્રસંગે વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ, ગેઇલ ઇન્ડિયા સહિત સહયોગ કરનાર વિવિધ કંપનીઓના પ્રતિનિધિઓ, ચાવજ ગામના સરપંચ અને अन्य कर्मचारियों उपस्थित રહ્યા હતા. ये गेल इंडिया लिमिटेड की ओर से यहाँ पे एबीसीएल पाइपलाइन में एक गैस लीकेज हुआ. यहाँ पे हमारी पाइपलाइन है यहाँ पे, तो उसमें गैस लीक के बाद में फायर हुआ. फायर के बाद में हम लोगों ने उसको पूरा फायर फाइटिंग किया. इसमें हमारे जो म्यूचुअल एड पार्टनर हैं जीएनएफसी, एनडीआरएफ और स्टेट फायर डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम यहाँ पे आई. उनके द्वारा पूरी जो सिनेरियो है उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया गया. तो मेन जो इसमें कहने की बात है कि जो हमारी पाइपलाइन है ये हाई प्रेशर पाइपलाइन है एंड ये अंडरग्राउंड है. सरफेस के नीचे 2 या 3 मीटर की गहराई पे रहती है. इसमें थर्ड पार्टी एक्टिविटी जैसे कहीं पे डिगिंग होती है या कहीं पे कुछ क्रॉसिंग होती है तो बिना बताए कुछ इस तरह की गतिविधियाँ होती है जहाँ पे इस तरह की घटना होने की संभावना रहती है. इस घटना को तो हम लोगों ने मैनेज कर लिया. हमारे पास जो लीकेज की इंसिडेंट आई उसके बाद में हमारी टीम ने इसको पहले प्रिवेंशन किया, लोगों को रोका जिससे लोग उसके नज़दीक ना जाएं एंड बाद में जो लीक हुआ उस साइट को हमने क्लैंप लगा के वापस लाइन को रेस्टोर कर दिया. और ये एक ऑफ साइट मॉक ड्रिल था लेवल 3 का. तो लेवल 3 का मतलब है ये हाईएस्ट लेवल का है जिसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी रोल रहता है. उन्हीं के ही मैनेजमेंट में पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, इवन हमारे सरपंच जो चावज गांव के हैं जिसके एरिया में ये आता है यहाँ पे. एंड इसमें जो हमारे जो पूरी गेल की टीम है, मैं बताना चाहूँगा गेल का एक प्रॉपर वेल मेंटेन्ड एक ERDMP प्लान है. ERDMP मतलब एमरजेंसी रेस्पॉन्स डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान. तो उस प्लान के हिसाब से एवरीथिंग इज डिफाइंड कि हमको क्या चीज़ें करनी है. सेफ्टी वाइज गेल के जो स्टैंडर्ड्स हैं बहुत हाई हैं. प्रोवाइडेड क्या है कि हमको जो पब्लिक का सपोर्ट है वो चाहिए उसके लिए, क्योंकि जो ये थर्ड पार्टी रिस्क है, रिमोट पूरा एरिया में हमारी पाइपलाइन जा रही है तो वहाँ पे कौन एक्टिविटी कर रहा है हर जगह पे मॉनिटर नहीं किया जा सकता है. लेकिन जहाँ पे अगर कोई भी देखता है उसको लगता है कि यहाँ पे नीचे लाइन है और कुछ काम हो रहा है, उनको सिंपली एक नंबर पे कॉल करना है, बाद में हमारी टीम आके उसको मैनेज कर लेगी. तो सभी लोगों से निवेदन है कि कभी भी हो तो हमारा 15101 पे हमें कॉल करें.